Hello students, welcome to my channel Incredible Scholars। अपने इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के टॉपिक टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस को। इससे पहले के वीडियोस में जो हमने डिस्कस किया था सेक्शन 1, जिसमें हमने इंडियन सोसाइटी और इकोनॉमी के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट को डिस्कस किया था, फिर एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, उनके सत्याग्रह मूवमेंट, रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट, ये सब हमने डिस्कस किया था। एंड आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट हाउ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट it was launched in January 1921. After that we had discussed that how non-cooperation Khilafat movement is spread to the different parts of our country and how the people they had visualized Swaraj, how they interpreted the term Swaraj in their own way. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द सस्पेंशन और यू कैन से द विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, as well as we'll be discussing about what conditions led to the beginning of the civil disobedience movement. First of all, let us discuss about the withdrawal of the non-cooperation movement. How was this movement, that means the non-cooperation Khilafat movement, withdrawn by Mahatma Gandhi? Actually, what happened on 4th February 1922, a violent incident took place at Chauri Chaura in Gorakhpur district of Uttar Pradesh. गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश और चौरी चौरा वॉज अ प्लेस जहां पर एक वायलेंट इंसिडेंट हुआ। एक्चुअली हुआ क्या, दैट वहां पर जो पेजेंट्स थे, किसान जो थे, दे हैड ऑर्गेनाइज्ड अ कैंडल मार्च डेमोन्स्ट्रेशन। उन्होंने एक मशाल जुलूस निकाला and there was a clash of those farmers with the police. और जब पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया तो व्हाट हैपन कि किसान एनरेज हो गए, गुस्से में आ गए। दे चेस द पुलिसमैन अपनी जान बचाकर वहां से भागे। किसानों ने उनका पीछा किया अपनी जान बचाने के लिए। जो किसान थे वो उनका पीछा कर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। जो पुलिस वाले थे उन्होंने अपने आप को थाने के अंदर बंद कर लिया, लेकिन किसान इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उस थाने में आग लगा दिया। They said that
police station on fire, and in that incident 22 policemen were burnt alive inside the police station. When the news of this violent incident reached to Mahatma Gandhi, he was very sad, and he had decided to withdraw the non-cooperation movement because he could never support the use of violence. वो अपने मूवमेंट में केवल नॉन वायलेंस को सपोर्ट कर सकते थे, वो कभी भी वायलेंस के फेवर में नहीं थे. एंड दिस वाज द रीजन उन्होंने ये कहा कि भाई स्टिल द इंडियंस दे वर रिक्वायर द ट्रेनिंग टू यूज द वेपन ऑफ नॉन वायलेंस. After the suspension of the non-cooperation Khilafat movement, or you can say basically the non-cooperation movement, not the Khilafat movement, क्योंकि इसको खिलाफत के साथ लॉन्च किया गया था, तो that's why it was called non-cooperation Khilafat movement. तो अभी खिलाफत मूवमेंट का सस्पेंशन नहीं हुआ, that was now carried out by the Khilafat committee, but non-cooperation movement it was decided by Mahatma Gandhi to be withdrawn. After the withdrawal of the non-cooperation movement, within the Congress there were now two groups. One group of leaders, यहां पर हमारे two groups within the Congress. कांग्रेस का एक ग्रुप विच वॉज लेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड सी.आर. दास. ये दो लीडर्स थे. इनके लीडरशिप में जो कांग्रेस लीडर्स थे, they were wanted that Congress should now stop boycott of legislative councils and participate in council elections. ये जो हमारे लीडर्स थे, इनका ये मानना था कि 1922 में ही हमारे काउंसिल्स के इलेक्शंस होने थे. तो उन्होंने कहा कि भाई अब कांग्रेस को ये जो काउंसिल्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इनका फॉर्मेशन हुआ है, उनका बायकॉट को कांग्रेस को स्टॉप कर देना चाहिए. दैट मीन्स कांग्रेस शुड नाउ पार्टिसिपेट इन द काउंसिल इलेक्शंस. क्यों? इसका रीजन उन्होंने क्या बताया, व्हाई दे वर वांटेड टू पार्टिसिपेट. तो पहला उन्होंने कहा कि भाई अगर कांग्रेस इन काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है तो उसके मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इलेक्ट होंगे, और जब वो काउंसिल्स में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे तो दे could argue for
more administrative reforms. Administrative रिफॉर्म्स। पहली चीज वो क्या कर सकते हैं कि और ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं। दूसरी चीज, दे कुड प्रोटेस्ट द repressive laws introduced by the government, यानी कि जो भी हमारे रिप्रेसिव लॉज हैं उनको वो क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं विद इन द लेजिस्लेचर्स इटसेल्फ। और तीसरी चीज, they could demonstrate that these councils were not truly democratic। यानी कि उनका पहला ये कहना था कि भाई वो अगर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इलेक्ट होते हैं, वो यानी कि कांग्रेस के मेंबर्स, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर वो इलेक्ट होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, तो वो और ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट से। वो गवर्नमेंट की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज हैं, जो उनके रिप्रेसिव लॉज हैं, उनको वो काउंसिल्स के अंदर ही क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा, वो ये दिखा सकते हैं, वो इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं पब्लिक के सामने कि भाई ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के द्वारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑटोनॉमी दी है, जो इंडिपेंडेंट पावर्स दी हुई हैं, वो वास्तव में केवल दिखाने के लिए है। रियलिटी में द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंट्रोलिंग दीज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन एन आर्बिट्ररी मैनर। वो गलत तरीके से इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो हमारा दूसरा ग्रुप था, अनदर ग्रुप ऑफ लीडर्स, जिसमें आपके जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ये दूसरा ग्रुप ऑफ लीडर था जो ये कहते थे कि भाई कांग्रेस should now start some constructive programs like promotion of khadi, education, health and sanitation facilities, especially in rural areas, यानी कि कांग्रेस के लीडर्स को क्या करना चाहिए, रूरल एरियाज में स्पेशली उनको एक तो प्रमोशन ऑफ खादी के लिए काम करना चाहिए,
हेल्थ फैसिलिटीज के एक्सपेंशन के लिए, एजुकेशन के एक्सपेंशन के लिए, साफ सफाई के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको अवेयर बनाने के लिए अब कांग्रेस को काम करना चाहिए, बजाय एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने। अब ये दोनों ग्रुप ऑफ लीडर्स के बीच में ऐसा लग रहा था कि देयर वुड बी नो मीटिंग पॉइंट्स, बट महात्मा गांधी had mediated the two groups of leaders. Motilal Nehru and C.R. Das, they were allowed to participate. ये जो group of leader था, allowed to participate in the election under the name of the Swaraj Party. That means these two leaders had formed the Swaraj Party, and under the banner of the Swaraj Party, this set of leaders had participated in the council elections. Again, there were two factors which had influenced the political scenario in India. दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिन्होंने 19 आप कह सकते हो मिड 1920s में पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को इन्फ्लुएंस किया. What were these? First of all, the Great Depression. You must have seen कि ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई. ठीक है, तो there were the two factors that influenced the political conditions in India. अब ये दो कंडीशन क्या थी, ये दो फैक्टर्स क्या थे? पहला, द ग्रेट डिप्रेशन of 1930s. आपको पता होगा 1929 ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत होती है with the crash of the world's largest stock exchange, the Wall Street Exchange in New York. And during the years of Great Depression, we know कि जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था डिक्लाइन हो गया, इट वॉज फेल, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड, people they had lost their incomes, right? And most importantly, जो हमारा वर्स्ट अफेक्टेड जो सेक्शन था इस ग्रेट डिप्रेशन से, दैट वाज द फार्मर्स, द peasants were the worst affected group. Their incomes began falling and finally crashed. Due to which they were demanding for
reduction in land revenue, but the government was not interested to concede their demands. यानी कि जो हमारे किसान थे, दे वर इन ग्रेट प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे, क्योंकि दे वर अनेबल टू पे द हायर लैंड रेवेन्यू डिमांड्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहला। दूसरा रीजन क्या था? 1927 में क्या हुआ कि ब्रिटेन के अंदर इलेक्शंस हुए, और उन इलेक्शंस में एक नई गवर्नमेंट का वहां पर फॉर्मेशन हुआ, एक कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट जो है वहां पर फॉर्मेशन हुआ, एंड द न्यू गवर्नमेंट इन इंग्लैंड appointed a statutory commission under chairmanship of Sir John Simon. सर जॉन साइमन के चेयरमैनशिप में इन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन, एक इंडिपेंडेंट कमीशन जो है वो अपॉइंट किया। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव to look into the progress of administrative and constitutional reforms इन द कंट्री, यानी कि इंडिया में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय द एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, उसकी प्रोग्रेस को असेसमेंट करना, और दूसरा टू सजेस्ट सम more एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। आगे और क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, उनको सजेस्ट करना। अब दिस कमीशन did not include any Indian member। इसके जितने भी मेंबर थे वो सारे अंग्रेज थे, सारे ब्रिटिश थे। इसमें कोई भी इंडियन मेंबर को शामिल नहीं किया गया था। सो ऑब्वियसली बोथ द Congress and the Muslim League बाइकॉटेड इट। दोनों ने इसको क्या कर दिया? बाइकॉटेड कर दिया।
They both have decided to boycott this commission. That means the Simon Commission. This Simon Commission reached India in February 1928. The Simon Commission reached India in February 1928. Its arrival was led to the beginning of a protest movement. इसके अराइवल के साथ ही इसके अराइवल को प्रोटेस्ट करने के लिए, यानी कि इस कमीशन को प्रोटेस्ट करने के लिए एक मूवमेंट की शुरुआत हो गई। जहां कहीं भी इसके मेंबर्स गए, क्या किया गया? मार्केट्स वर रिमेन क्लोज्ड, remained closed. Demonstrations were held. Members were shown black flags in protest and people shouted slogans. Go back, Simon. तो साइमन कमीशन के मेंबर्स जहां जहां पर गए वहां उनको प्रोटेस्ट किया गया, प्रोटेस्ट मार्चेस ऑर्गेनाइज किए गए, डेमोन्स्ट्रेशंस किए गए, धरना प्रदर्शन हुए और इसके जो मेंबर्स थे उनको काले झंडे दिखाए गए उनका प्रोटेस्ट करने के लिए, और साथ ही साथ जहां भी वो गए वहां पर उनका स्वागत साइमन गो बैक इन नारों के साथ किया गया। मीनवाइल in 1930 the British government organized the first roundtable conference. The Congress, the Muslim League, as well as the other major political parties, the social groups, cultural groups, linguistic groups, their representatives, they were invited by the British government to discuss over the recommendations of the Simon Commission. Congress boycotted. It had decided not to participate in the first roundtable conference. Meanwhile, इससे पहले in 1929, in the month of December, the Congress session was held in Lahore. It was presided over by this session
was presided over by जवाहरलाल नेहरू। और ये हमारा एक क्लियर इंडिकेशन था that now the young leaders within the Congress, they had become more assertive, more influential. In this session of the Congress, two resolutions were passed. पहला, demand for complete independence. ऐसा पहली बार था कि कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी। एंड एट द सेम टाइम द पीपल वर अपील्ड टू सेलिब्रेट 26 January 1930 as the Independence Day। लोगों से ये कहा गया कि वो 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें। द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन had attracted very little attention of the people, less participation of the people। बहुत ज्यादा लोगों ने इस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, बहुत हल्का फुल्का सा प्रोग्राम। एंड दिस वॉज द रीजन नाउ महात्मा गांधी वॉज बिजी in making the strategy for a mass movement, for a mass satyagraha, in which he would ensure the participation of all the different sections of the society। और ये जो हमारा मास मूवमेंट था, जो मास सत्याग्रह जिसके बारे में महात्मा गांधी सोच रहे थे, that was the civil disobedience movement, about which we will be discussing in our next video। Till then you can just go through the video। इस वीडियो में हमारे कुछ जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहला, why was the non-cooperation movement withdrawn? ये पहला क्वेश्चन बनेगा। तो ऑब्वियसली आप चौरी चौरा इंसिडेंट को वहां बता सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई वर सम लीडर्स विद इन द कांग्रेस वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसिल इलेक्शंस आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपका रीजन आ जाएगा कि भाई वो इसलिए पार्टिसिपेट करना चाहते थे कि भाई वो जो है गवर्नमेंट की रिप्रेसिव जो भी पॉलिसीज हैं उसको वो प्रोटेस्ट कर पाएं, ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए वो आर्ग्यू कर पाएं, डिमांड कर पाएं। और तीसरा, वो लोगों को ये दिखा सकें कि ये जो हमारे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी वो हमारा ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं थी। तीसरा क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से हमारा आता है, व्हाट वर द टू कंडीशंस व्हिच लेड टू or which had influenced the political scenario in India। तो उसमें आपके दो रीजन, पहला आपका ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 और दूसरा आपका अपॉइंटमेंट ऑफ द साइमन कमीशन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डिड द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग प्रोटेस्ट द साइमन कमीशन? तो उसका रीजन
कि इसमें हमारा कोई भी इंडियन मेंबर शामिल नहीं था। साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट कब हुआ, 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, साइमन कमीशन के फॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, यह आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। देन हमारा लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, कि ये हमारा क्यों इंपॉर्टेंट था, व्हाई वाज द कांग्रेस सेशन, द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करते हैं। तो यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस, वी हैव discussed the answers of all these questions in this video, so just keep on revising and good day ahead.